guys, welcome to my channel Happy Learning with Bhavna. So guys, today's video is all about the very basic topic of grammar which is known as sentences. Yes. So अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें उसका बहुत जो बेसिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर एक किसी भी बच्चा है जो पढ़ाई करना सीख रहा है, उसको अगर बेसिक ही नहीं पता, उसको अगर अक्षर ही नहीं पता तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा, राइट. वो अपने सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर पाएगा. तो वैसे ही अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट सेंटेंसेस. कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. ओके, सो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंसेस होते क्या हैं, राइट. जैसे अगर हम बात करते हैं ABCD, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन से A to Z. ओके, सो अगर हम देखें ABCD, ये क्या है? दीज आर लेटर्स और वी कॉल देम एज अल्फाबेट्स. ओके ओके, राम श्याम गीता सीता मार्केट पपाया एप्पल, ये सब चीज़ें क्या है? दीज आर नोन एज वर्ड्स. जी हाँ, इनको हम शब्द कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में. सो अगर हम इनकी बात करें गाइस, सो लेटर्स जो होता है वो सिंगल होता है, और अगर हम इन लेटर्स को जोड़ देते हैं, व्हेन वी कंबाइन दीज लेटर्स एंड फ्रेम अ मीनिंगफुल थिंग, दैट इज़ नोन एज अ वर्ड. ठीक है, जब हम इन्हीं वर्ड्स को एक बड़े से सेंटेंस में जोड़ देते हैं जिसका कोई मीनिंग बनता है, जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, आई वॉन्ट टू ईट बर्गर. ठीक है, सो एक लेमन लैंग्वेज की बात करूँ तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, रेट्स. So when it comes to a layman, you can say that group of words which make a sentence is known as a sentence. Yes. So अब आप जानते होंगे सेंटेंस क्या होते हैं. So अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेंटेंस कितने तरह के. Guys, there are 5 types of sentences. So the first sentence is assertive sentence, जिनको हम declarative sentences भी कहते हैं. Second sentence is interrogative. Okay, these are also known as question sentences, जिनमें हम questions पूछते हैं. The third one is optative sentences. Okay, the fourth another type of sentence is imperative sentence, and the fifth one is exclamatory. So just for a glance, let's revise. A group of words which makes a sense is known as sentence. कोई भी शब्दों का समूह जो एक अर्थ बनाता है उसको कहते हैं sentence. जैसे Ram wants to eat papaya, she wants to go to market. Okay, I want to make this video. Okay, there are 5 kinds of sentences: assertive, interrogative, optative, imperative, and then exclamatory. Yes. Okay, so guys, the first kind of sentence is assertive sentence. Okay, and assertive means simple. Okay, so assertive sentences जो होते हैं वो 2 parts में divided होते हैं. They are again of 2 types. The first is affirmative, second is negative. When it comes to affirmative का मतलब होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी सेंटेंस है किसी भी लैंग्वेज में, वेदर इट कम्स टू इंग्लिश और वेदर इट कम्स टू एनी लैंग्वेज, ओके, सो या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा. बेसिक जो रूल कहते हैं, राइट. सो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव जो होते हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं, राइट. Sentences shows positive attitude towards the sentences, however negative sentences shows negative attitude towards the sentences. Okay, and the formation of these sentences are subject plus helping verb plus our main verb then object. Okay, so now let's practice. So कुछ examples मैं आपको बताने जा रही हूँ. जैसे India is a vast country. So इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. माई फादर लव्स आइसक्रीम, सो उन्हें आइसक्रीम पसंद है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है. बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, थर्ड सेंटेंस, माई ब्रदर डोंट लाइक टू हैव ब्लैक टी. सो this is a negative sentence. Reason being is that there is a negative word which is used, which is don't. My brother don't like to have bad tea. इसलिए नेगेटिव नहीं है क्योंकि मेरे भाई को बेड टी लेनी पसंद है, नहीं है, इसलिए नेगेटिव है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, सो जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नो, नीदर, नॉर,
नेवर, सो इन वर्ड्स को हम नेगेटिव मानते हैं, और अगर ये वाले वर्ड्स किसी भी आपको सेंटेंसेस में दिखें तो वो एक सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाया जाता है. ओके, so just for a glance, let's have a revision of declarative sentence. These are again subdivided into two categories. The first is affirmative and the second is negative. Affirmative means positive and negative have negative in nature. And negative sentences are those which generally have that particular negative words in them, which are no, neither, not, never, not, etc. Okay. Okay. So the formation of these sentences are subject plus helping verb plus main verb plus object. Okay. So the second kind of sentences are interrogative sentences. Sentences are used to make an inquiry or to ask a question. ठीक है. So या तो ये जो भी interrogative sentences होते हैं ये किसी इंक्वायरी के लिए पुट करे जाते हैं, पुट अप, या फिर जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो, जैसे व्हाट इज योर नेम, सो वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन ओवर हियर. ओके, where were you last night, आप कहाँ थे, so we are inquiring in this question. Okay, so interrogative sentences में we generally interrogate or we ask questions from others. Okay, interrogative sentences are again subdivided into two parts, yes or no questions and then WH questions. So yes or no questions, when it comes to yes or no questions, they are very simple, which have their particular answer in either yes or no. Okay, like would you like to have a cup of coffee, yes or no, whatever according to your wish. Would you like to play with me, either yes or no. Okay, so these are one word I can say answers. You have to answer either yes or no. Okay, coming towards our WH type of questions. So WH here means WH family. Okay, so मैं आपको बता दूं पहले WH family होती क्या है. WH family includes all the question words which start from WH word. For example, what, when, why, whom, where, whose. ठीक है. So अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो ये WH से शुरू होते हैं. So all these are known as WH family. So the formula for these sentences: helping verb plus subject plus verb plus object. Okay. Example: do you like tea? So do is our main, you is our subject, like is our main verb, and then T is our object. Yes. Similarly, another example: did they like your idea? So did here is again helping verb, they is subject, like is our main verb, or your idea is predicate. Predicate means object. Okay. So I'm gonna tell you about some of the helping verbs. मैं आपको कुछ helping verbs बता देती हूँ जो बहुत important है when it comes to grammar, and those are is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, may, might, shall, should, ought to, need, dare, etc. Okay, ये हमारे helping verbs होते हैं. Guys, our third type of sentence is imperative sentence, and these kind of sentence include request, order, command, suggestion, invitation, and offer. When we offer something to someone, yes. And the formula for these sentences is verb plus our object. Okay, there is no subject in imperative sentences. जी हाँ, imperative sentences की खासियत ये है कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, किसी भी पर्सन का नाम नहीं आता है. ठीक है. imperative सेंटेंस की गाइस खासियत ये होती है कि इसमें जो वर्ड यू होता है, जो सब्जेक्ट होता है यू, वो अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ होता है, इसमें लिखा नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ मुझे बचा लो. ठीक है. अगर कोई पर्सन डूब रहा होगा तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा राम आके मुझे बचा लो, श्याम आके मुझे बचा लो. वो डायरेक्टली बोलेगा प्लीज़ सेव मी, और सामने वाला पर्सन समझ जाएगा दैट हाँ वो मेरे से ही बात कर रहा है. ठीक है. ही इज़ आस्किंग फॉर हेल्प. Move towards our second example. So you're talking with someone and you say that just get out of my room. So you will not use the word you will directly say just get out of my room. Okay. Definitely if you're talking with some person, he will get to know that yes you are talking with that person only. आप उसी person पे गुस्सा हो, आप उसी person से कह रहे हो मेरे रूम से बाहर चले जाओ. So this is already understood कि वो person यही समझेगा कि आप मेरे से ही बात कर रहे हो. Again हमने इसमें you का use नहीं करा है, but still हमारा जो action है, हमारा जो work है, that will be performed by the other person. Now coming towards our fourth kind of sentence is optative sentence. Yes, optative sentence. So guys, these are very simple sentences. It include only three kind of sentences.
बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं which are related to prayer, wish or curse. Yes, so prayer which we generally do from God, something which we generally give to someone, and when it comes to curse it is again okay, curse means badwa. So when it comes to prayer, for example, may God bless you. Okay, so जब हमने इसमें God का नाम ले लिया, ठीक है, so ये एक prayer हो गया, ठीक है. Wish का example, all the best, like we generally wish someone like all the best for your exam, all the best for this thing, have a happy journey, have a beautiful life ahead. So these are the example for wish. When it comes to curse, we sometimes say that go to hell, I don't care, I don't bother. Okay, so these sentences are known as optative sentences when we do prayer, when we wish someone, or when we do curse to someone. So these sentences are known as optative sentences. What's our fifth kind of sentence? That is exclamatory sentences. जी हाँ. So these sentences are those which has a very strong expression of wonder, joy, grief, sorrow, applause. Yes. So like hurrah, we have won the match. So in this there is a strong expression of happiness that हाँ हम मैच जीत गए हैं. Okay. Wow, what a beautiful place. Wonder, this is expression of wonder that we have gone to some place and we really liked it a lot. So हम यहाँ पे एक wonder का expression दे रहे हैं. Okay. Alas, I have lost the match. Alas, my grandfather is no more. So this is something, a strong expression of sorrow. So this is all about sentences, guys. So let's have a glance. The words which makes a sentence is known as sentence. There are 5 kind of sentences: assertive, interrogative, imperative, optative, and last is exclamatory. Yes. So the sentences are of 2 types: affirmative and negative. Affirmative means positive. Negative sentences are those which have negative words in them, such as no, neither, not, never, nor, etc. Second, interrogative sentences, which are generally used to make an inquiry or to ask a question from someone. The third sentence is imperative set of sentences include request, order, command, suggestion, forbidding, and invitation, etc. In these kind of sentences, the subject you is hidden. It is just understood, not used or not spoken. Okay. Fourth kind of sentence is optative sentence. These kind of sentences include wish, prayer, and curse. And the last but not the least is exclamatory sentences. These sentences are those sentences which shows a great expression of, or a deep expression of, wonder, happiness, joy, sorrow, grief, applause, etc. Yes. So guys, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे सेंटेंसेस जो हमने पढ़े हैं आज की वीडियो में, इन सब पे आप 5 or 10 sentences बनाएं and try to use all kind of sentences. Okay, and see you in my next video, guys. Bye bye.